मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम निकल पड़े मुंबई के लिए। और हमें जाने के लिए थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ओके, फाइनली हम मुंबई पहुंच गए और अभी बैग का इंतज़ार है। तो देखते हैं कब तक बैग आता है। और अभी हम चलेंगे निशिकांत जी के स्टूडियो पे। फिर वहाँ से कल हम चलेंगे बिक्कन सर के पास। मिलते हैं वहीं पे। ओके, जैसे कि आप जानते हैं मुंबई आ चुके हैं और ये हम स्टूडियो विज़िट कर रहे हैं। निशिकांत जी का स्टूडियो है। काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स है। जो हम ऑनलाइन में देखते हैं उससे कहीं गुना अच्छा आपको सामने से उसका रौनक देखने को मिलेगा। पेंटिंग में काफ़ी सारे अचीवमेंट, काफ़ी खूबसूरत। और साथ में हमारे सिकंदर सर भी है। हेलो निशिकांत जी। हाय। थैंक यू। और फिर हम चलेंगे इसके बाद बिक्कन सर के स्टूडियो में और फिर नेक्स्ट हम वर्कशॉप में। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ओके, निशी जी हमको दिवाले गांव लेके आए और हाँ, यहाँ तो नज़ारा कुछ एकदम डिफरेंट है। एकदम वो दूर आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिलेगा। कश्मीर जैसा फील आने लग रहा है फिर से मुंबई में। और वो रिफ्लेक्शन जो कि हमें बार बार पुकारता है। हमारे साथ सिकंदर सर है जो कि अभी बिजी है। बहुत ही प्यारा कलर है मछुआरों का। ये यहाँ पे नेट वगैरह है, देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है दिवाले। यहाँ पे दो टाइप का बोट्स हमको देखने को मिल रहा है, एक छोटे और एक बड़े साइज के। देखो, हर एक कॉर्नर में एक सब्जेक्ट है। लोकेशन का क्या नाम है? दिवाले। दिवाले। दिवाले, ये वाकई दिवाले ये देखो सिकंदर सर, वो वाला। ये पैसा वसूल हो गया आज किसी का वेट कर रहे हो? नहीं नहीं, वो आ जाएगा। कौन?
ओके, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम फटाफट ब्रेकफास्ट में हैं। और देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट का क्या वाव मेनू है, वाह ग्रेट। मैम इसका क्या नाम है? अप्पे। अप्पे। तो बहुत ज़बरदस्त मेनू, तो पहले खा लिया, काफ़ी टेस्टी है, गरम गरम है। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम रेडी हो चुके हैं वर्कशॉप में जाने के लिए। ये बिक्कन सर के घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है। आप देख सकते हैं बिक्कन सर के बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग, स्कल्पचर, अवार्ड एंड उनके मम्मी के पेंटिंग। बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैल्कनी भी है और दूर दूर तक मुंबई। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हम मुंबई स्टूडियो में हैं जहाँ वर्कशॉप चल रहा है। तो आज डे 1 है और हम पहले आगे थोड़ा सेटअप करना था, तो बिक्कन सर भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो और कुछ पेंटिंग मैंने लेआउट किया, सर ने भी बहुत सारे पेंटिंग लिया किया, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टूडियो है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा जो कि क्लाइमेट बन रहा है। तो पेंटिंग थोड़ा लेके आया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ ऐसे सामने से जब देखते हैं बहुत कुछ सवाल आता है और सवाल के जवाब हम देने के लिए पेंटिंग लेके आए इतने सारे। तो कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। वर्कशॉपचं सेटअप रेडी होत आहे। हाँ, मैं ज़्यादातर कोल्ड प्रेस यूज़ करता हूँ। ये आर्टिस्ट का कोल्ड प्रेस में उतना टेक्सचर है कि हमको टेक्सचर भी मिल जाता है और स्मूथनेस भी। तो मेरे साथ बिक्कन सर है, हमारे मेंटर। So we all are waiting for all of you. Everything is set up. आ जाइए जल्दी। और हमारे साथ विद्या मैम, हम तो सबसे पहले पहुंच क्या गए। बोलते हैं, हाँ भाग्यश्री मैम, भाग्यश्री, मधुरा, कृपा मैम तिकडे रेडी करतायत। अच्छा कृपा मैम है क्या? ओके। So इसलिए आपका बेसिक पक्का। Yes. So today we have this subject. This is very different subject, very simple subject. How you can study from small subject and how you can get yeah, please. Drawing from a photograph is a little bit better than we draw from life when we have that thing in front of us. We have so many for direction. Thanks to all the sirs, they gave that opportunity to learn everything all new and better. So I'm glad I'm here. And yeah, I should say I love sketching. I love to sketch everything and anything, standing, sitting, everything. And watercolors is my current muse. I was very bad. Whole last year I was very bad in watercolors. It's like in the midnight in a thunderstorm, you put somebody in an ocean, not knowing how to swim. I struggle, but now I am able to get some support thanks to Achintya sir, Nishikan sir, and I have been listening to Vikram sir also. Got some support. I'm trying to do better through every painting I do, every sketch I make. So sketching, as you said, sketching is my passion. In
24/7 is not enough to sketch. Once we get into it, you know, it's like it's more than meditation, medication, whatever. And my daughter is into clinical psychology, so we mix art and psychology. We know how important art is for anybody, you know. So she's a digital artist and cartoonist and illustration. How she mixes psychology and art, I see that, and we use art to do several things, not only for us, for the people around us. So we are here. So happily, I saw the moment I spent. I did not know anybody, but you all wished me and you welcomed me. So it's all because of art and this community. Yes. See, I never attended any class live. I only used to watch the recorded version. I told sir. So you also. came all the way from Hyderabad. Art and painting again, because I was always doing fashion illustration. I was also teaching in my college, but so drawing and sketching was always a part of my life, but not painting and actually doing, you know, cityscapes or landscapes or anything, or portraits. Like I actually really like portraits. So in the pandemic, it was a time when I started art again. And it was just on Instagram that I just happened to see the Kalaram ad, and that is where I just thought that, okay, you know, maybe I should just give this a try. So I still remember artists, mentors who have so much to tell you and so much to give, that I think 5 days is also not enough. Like, I think at the end of the Bundi trip, we all felt that, you know, this is not enough. Like, you know, why can't we just still continue? It was so good. And Bundi as a place also was really good. Beautiful. I mean, it's such a small town. The people over there, they are so welcoming. Any street you go, they'll come out, they'll offer you refreshment, they'll offer you, okay, if they see an artist, the respect that is there. Anywhere you're sitting, like sir is sitting giving a demonstration, and you have like so many people coming and asking that आप चाय लेंगे, आपको नाश्ता दे, ये दे, means you know that you actually feel that warmth that is there with so many people invited us inside their houses. Inside their houses, we went. We actually went to people's houses, inside their houses, seeing, you know, things from their terraces, and more than that, I guess we met such amazing like-minded artists, and which was in December. So from there till now, only a few months, you just suddenly feel, you know, so many more people who, you know, think alike. And I think circle bada. The more and more. So all these people I know all from Bundi, and they are like family. And we're still connected. Like, and we are all still connected. So yeah. इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है। वो कार्ट्रिज बुक भी जो है 300 GSM की, इतना थिक पेपर मिलता नहीं, तो इनका है। तो वो आज वो लाए कि नहीं पता नहीं, बट आज ये हमको दिया है उन्होंने। एक सेकंड, मैं आपको ये दिखाता हूँ। थैंक यू। मेरा इतना नहीं था, वो इतना अच्छा तारीफ किया, वीडियो हो रहा है तो करके सिग्नेचर भी इतना बड़ा हो गया था। तो बॉक्स तुझा एम्प्टी है। उसका फोटो निकाल के रख पाएंगे और बाद में सर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा ड्राइंग पेंटिंग में गड़बड़ होता है। पहुंच गए वो लोग इधर ही है क्या? वो सिकंदरा वो लग जाएगा ना शॉपिंग में एक बार। टगम के लिए, मनी के लिए, ड्रिपू के लिए, जिस तरह सनलाइट है वो वार्म हो जा रहा है।
ये अजिंक्य सर वीडियो ले रहे हैं सीलिंग